Welcome to Vino. This is session number 9 of CSHA. In this session, we are going to cover delegates and events. Now, why to use delegates? Delegates allow the programmer to encapsulate a reference to a method inside a delegate object. डेलीगेट जो है वो एक फंक्शन पॉइंटर की तरह एक्ट करता है. दैट मीन्स वो एक फंक्शन की रेफरेंस को कंटेन करके रखता है जिसके थ्रू आप उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं. The delegate object can then be passed to code which can call the referenced method without having to know at the compile time which method will be invoked. Normally हमें compile method के time information नहीं होती कि हमारा किस टाइम पे कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है. जस्ट रन टाइम पे वो डेलीगेट ऑब्जेक्ट है वो डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्क करे और वो फंक्शन कॉल हो. नाउ डेलीगेट इज एन ऑब्जेक्टिफाइड फंक्शन. It inherits from system.delegate. System is your namespace and delegate is your class from where the delegate functions are inherited. They are sealed implicitly. That means we can't use them as a base class. For example, delegate int func which take a parameter ref int x. आपका एक पैरामीटर रेफरेंस टाइप का x वेरिएबल है जो आपके फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर है एंड डेलीगेट टाइप ये स्पेसिफाई कर रहा है कि आपका ये एक डेलीगेट फंक्शन है. दैट मीन्स पॉइंटर टू अ फंक्शन. इट डिफाइंस अ न्यू टाइप ऑफ फंक विच टेक int and return as well as int. It declare like a function with an extra keyword which is a delegate. Normally हम फंक्शन भी ऐसे क्रिएट करते हैं, बस एक नया एक्स्ट्रा वेरिएबल कीवर्ड हमने ऐड कर दिया, दैट इज योर डेलीगेट. इट स्टोर्स अ लिस्ट ऑफ मेथड्स टू कॉल. कौन कौन से मेथड्स आपको उस पर्टिकुलर क्लास के फंक्शंस के कॉल करने हैं ये उसकी लिस्ट को स्टोर करके रखता है. लाइक आपको सॉर्ट करना है डाटा बट डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स के लिए, तो आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप जस्ट उसके सारे फंक्शंस डिफाइन कर देंगे और रन टाइम जैसे ही आप अपना एलिमेंट एंटर करेंगे अकॉर्डिंग टू योर डाटा स्ट्रक्चर वो ऑटोमेटिकली फंक्शन को कॉल करके पर्टिकुलर एसोसिएटेड फंक्शन को फायर कर देगा. नाउ परफॉर्म प्रैक्टिकली. Start with new project. Now performing a delegate example. In this, first of all, we create a delegate function outside my class program. Just write public delegate keyword, then the return type. This time return type is double and your function name. I'll write d underscore product prod and it accepts two parameter of integer type int a and int b. It's a declaration only. Terminate them with a semicolon. And in class program inside the main start performing your function. First of all you define your dProduct function and again a new function which is used to as a reference function. So first I declare the reference function, that is static double is your return type and the function is fn, which again accepts two variable of integer type val1 and val2. After that define the function. I'll just simply return val1 into val2, that is product of these two variables. Close the function. Shift. As it is a static function we can call without the object. I'll just simply put outside the main function. And now in main function I call this function using delegates. For this I'll first create a instance of dProduct, that is dProd. Instance is d
which is equal to new d underscore product. In this, pass a parameter. Here parameter is your function fn, which is of static type, and I'll just define outside the main. Here delegate instance is created. After that, print a small message using console.writeLine that please enter two number. Within inverted comma, write the message, please enter two numbers. Terminate the line. After that, int v1 is a variable which is used to accept one value. I'll use int 32 dot parse, and in between bracket write console dot readline. रीडलाइन फंक्शन आपको एक स्ट्रिंग वेरिएबल रिटर्न करता है, बट आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए. सो आई यूज int32.parse फंक्शन विच इज यूज टू कन्वर्ट एंड स्ट्रिंग टू अ इंटीजर टाइप. सेम फॉर सेकेंड वेरिएबल v2, int32.parse and in between console.readline. Now this will accept two values as a input. After that, you need to pass arguments to your delegate. Firstly, I'll create a variable of double type, that is res, short form for result, and d is your instance of delegate, and here I am passing the values v1 and v2. As these two are those number for जिसके लिए हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है. एंड देन सिंपली प्रिंट योर रिजल्ट यूजिंग console.writeLine in brackets write result is equal to curly braces to denote how many variables values you are going to print. I'll write 0 and print the value of res variable. Terminate the line using terminator, that is semicolon, and after that write console.readline. Close your main function as well as your class, save the program and execute the same. Now the message will appear, please enter two number. I'll enter 23 and 2. You can see the result is 46. I'll get result because the function fn is used to find the product of the two variables which I have passed in the d, that is your instance of delegate. This is the example of your delegate class. In this, d is pointing a function, and at the runtime I'll entering value and it give me the result of the product. Next is your events. And ch event is a class member that is activated whenever the event it was designed for occurs. Event तब फायर होता है जब आप कोई ऐसा इवेंट या फिर जो ऐसा काम करें जिसके लिए आप वो इवेंट बना है. जब वो इवेंट अकर करोगे तभी आपका सी हैश का जो हमारे क्लास मेंबर्स के अंदर इवेंट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं. यूजुअली हम एक टर्म यूज करते हैं फायर्स, दैट इज व्हेन द इवेंट इज एक्टिवेटेड वी सिंपली सेज इवेंट इज फायर्ड. Anyone interested in the event can register and be notified as soon as the events fire. At the time an event fires, registered methods will be invoked. जब हमारा इवेंट फायर होता है उस टाइम पे रजिस्टर्ड मेथड, वो मेथड जो उस इवेंट के ऊपर रजिस्टर्ड हैं वो इन्वोक्ड होते हैं. A CH event and delegate work hand in hand
to provide a program's functionality. It starts with a class that declares an event. इवेंट आपका तब स्टार्ट होता है जब आपकी वो क्लास जिसने उस इवेंट को डिक्लेयर किया है या फिर इवेंट को फायर किया है वो डिक्लेयर होगा. एनी क्लास इंक्लूडिंग द सेम क्लास दैट द इवेंट इज डिक्लेयर्ड may register one of the method for the events. Now first step is declaring an event. First of all we need to declare an event. For example, public event changed event handler changed. Here the event is your changed and the handler is used changed event handler. जो भी event आपका declare होता है उसके accordingly एक handler होता है जो उस event को particular event को handle करता है. Second step is to invoke an event. Once a class has declared an event, it can treat that event just like a field of a indicated delegate type. Delegated type का जो एक field होती है accordingly वैसे जब हम event को invoke करते हैं वो like a field of a delegate type treat की जाती है. Delegate can be any .NET delegate और declared one. That means delegate आपका वो भी हो सकता है जो .NET framework के अंदर declared है या फिर वो delegate जो आपने declare किया है particular event के लिए. Now practical example of your events. Create a project. And in this first you need to select which event you want to occur. So first I declare a delegate outside the main or even outside the class only. Here we type public delegate keyword void event handler. Brackets and semicolon. After that inside your class declare public static event, that is your event handler, and object for that I'll declare S. Inside the main write S with a plus sign and equals to new event handler P. S is your event handler instance, write event handler, and between this you need to specify a function which raised this particular event, and for that we first declare a function so that we can pass a function inside this. So outside the main within the class declare some function. I'll declare a function static void P. My function is returning nothing, so I'll take a return type void. In this print a message console dot write line and print inside P. Terminate the line using semicolon. Again create a function whose name is P1, and this time the message will change to inside P1. Third function static void P2, and the message is console dot write line inside P2. Terminate the line with a semicolon,
close your function declaration. Now I have three functions. So first, back to the statement, s plus is equal to new event handler and the function is p. Terminate the line. Follow the same procedure for rest of two function, that is s plus new event handler for p1, and the third function which can raise your event is p2. S plus is equal to new event handler and p2. S plus is just in shorthand form. You can write s plus is equal to new event handler or just s is equal to s plus new event handler p2. This indicates the destination and the first argument of the plus function is similar. Now you need to invoke your event. So simply write s dot invoke. Invoke is a function in your event handler class. After that, the last statement of your main is same console dot read line, brackets and semicolon. In this program we have a delegate void event handler. In program I declare an event handler whose object is s. Inside the main I'll use s plus is equal to new event handler, and in bracket of event handler I pass a function which can raise the particular event. It's your choice. You can write for 3 functions or 2 functions, but every time you write, you will write event handler and inside the bracket the function which raise that particular event. S dot invoke console dot read line. These 3 functions are of static type inside the program class and outside the main. Save the program and build it. You can see inside P and inside P1 मैंने P2 फंक्शन की लाइन डिलीट कर दिया. दैट मीन्स उस पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करने के लिए कोई हैंडलर अवेलेबल नहीं है. वो ही स्टेटमेंट आएगी जिसके लिए आपने इवेंट हैंडलर को कॉल किया. मैंने 2 ही फंक्शंस के लिए कॉल किया, P एंड P1. P2 के लिए नहीं किया तो उसने सिर्फ 2 ही मैसेज प्रिंट किए, इनसाइड P एंड इनसाइड P1. इन दिस वे यू कैन हैंडल एनी इवेंट. Event can be anything. You are clicking a mouse, pressing a key, whatever it is. Now do it yourself. First question is explain delegates. You need to explain the delegates, what are delegates and why we need delegates. Secondly, give an example of mouse event. आप माउस से जो इवेंट करते हैं लाइक योर क्लिक माउस, ड्रैग योर माउस, उस पर्टिकुलर इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे वो आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इवेंट हैंडलिंग को यूज़ करके और डेलीगेट्स यूज़ करके एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.